Again, welcome you all to my YouTube channel, Omkar English Classes. And this video is going to be about the third part of the chapter, the third level from Vista's 12th class book. Students, this is the last part, and after watching this video carefully, I will give you some questions in the last slide of this video. You have to answer those questions. Was finding something in his stamp collection. When a new stamp is issued, stamp collectors buy some and use them to mail envelopes to themselves on the very first day of sale, and the postmark proves the date. The envelope is called a first day cover. They are never opened. You just put blank paper in the envelope. That night, among my oldest first day covers, I found one that shouldn't have been there, but there it was. It was there because someone had mailed it to my grandfather at his home in Galesburg. That's what the address on the envelope said, and it had been there since July 18, 1894. The postmark showed that, yet I didn't remember it at all. The stamp was a 6-cent dull brown with a picture of President Garfield. Naturally, when the envelope came to Granddad in the mail, it went right into his collection and stayed there. Till I took it out and opened it. The paper inside was not blank, it read. So students, when Charlie was searching out something from his stamp collection, so that night Charlie came across a first day cover. What is a first day cover, students? It is an envelope with a stamp on it. That stamp collectors मेल टू themselves. जो स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं कोर्ट्स वगैरह में, वो खुद को मेल करते हैं उनको. मतलब फर्स्ट वाला जो स्टैम्प होता है वो एनवलप खुद को ही मेल कर लेते हैं, जिससे उनके पास एक रिकॉर्ड रहे कि पहला एनवलप हमने रख लिया था. ऑन द फर्स्ट डे ऑफ इट सेल टू मार्क द डेट. उसकी डेट को मार्क करने के लिए कि हाँ इस दिन इस स्टैम्प की सेल शुरू हुई थी, उनको पता रहता है. तो वो वाला स्टैम्प वो खुद को ही मेल कर लेते हैं, खुद के घर ही पहुंचा देते हैं. दे आर जस्ट ब्लैंक इनसाइड एंड आर नॉट मेंट टू बी ओपन्ड. मतलब वो अंदर से ब्लैंक होते हैं, उनका ये मतलब नहीं होता कि कोई उनको ओपन करे. सो दैट नाइट ही फाउंड बाय सरप्राइज वन ऑफ हिज ग्रैंडफादर्स ओल्ड फर्स्ट डे कवर्स. समवन हैड मेल्ड इट टू हिज फादर at his home at Galesburg, as he saw from address on the envelope. एनवेलप के ऊपर एड्रेस देख के उसको पता लगा कि ये वाला स्टैम्प मेरे ग्रैंडफादर को, मेरे फादर को किसी ने मेल किया था. तो इसका मतलब वो थर्ड लेवल अभी भी है, जहां सब शांतिपूर्ण सब चीजें हैं. As he saw from the address on the envelope, the postmark showed that it had been there since July 18, 1894. जो पोस्टमार्क लगा हुआ था उससे पता लगा कि ये 1894 से यहीं पर है. The stamp had a picture of President Garfield on it. It was a 6-cent dull brown color stamp. His grandfather had put it in his stamp collection. दादाजी ने अपने स्टैम्प कलेक्शन में रख लिया था. स्टैम्प कलेक्शन को करते थे कुछ लोग उस समय भी. And Charlie now discovered it. और चार्ले को अब ये मिला. The paper inside had a letter written in it. उसके अंदर एक लेटर था, और लेटर पे क्या लिखा हुआ था स्टूडेंट्स? That I am going to explain. This address is 941 Willard Street, Galesburg, Illinois. Date is July 18, 1894. And it was written by addressing Charlie.
I got to wishing that you were right. Then I got to believing you were right. And Charlie, it is true. I found the third level. I have been here 2 weeks, and right now, down the street at the Delia, someone is playing a piano, and they are all out on the front porch singing and singing Nelly home. And I'm invited over for lemonade. Come on back, Charlie and Louisa. Keep looking till you find the third level. It's worth it, believe me. So इस लेटर का मीनिंग क्या है? किसने भेजा ये लेटर? ये लेटर भेजा था सैम ने. उसने लिखा, this letter talked about how the writer wished his third level story was true until he actually started believing it to be true. He had found the third level. उसने लिखा कि मैंने थर्ड लेवल ढूंढ लिया है and had been there for 2 weeks. 2 हफ्ते से यहाँ पर हूँ. He describes the place. जैसा उसने बताया था उस प्लेस को ऐसे डिस्क्राइब करता है. सब कुछ पीसफुल है, चारों तरफ ग्रीनरी है, सेरेनिटी है. एंड किसी ने मुझे लेमनेड के लिए भी, नींबू पानी के लिए इनवाइट किया है. वो चार्ली और लुइसा को भी बोलता है कि कभी थर्ड लेवल को ढूंढने की कोशिश बंद मत करना. इसको ढूंढते रहना जब तक ये ना मिले. द नोट इज साइंड सैम. इस नोट पे सैम का सिग्नेचर था. एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई फाउंड आउट दैट सैम bought $800 worth of old style currency that ought to set him up in a nice little hay, feed and grain business. He always said that that's what he really wished he could do. And he certainly cannot go back to his old business, not in Galesburg, Illinois, in 1894. His old business? Why? Sam was my psychiatrist. सो स्टूडेंट्स, चार्ली सोचने लगता है सैम ने सिग्नेचर किया हुआ है और उसने क्या लिखा है कि मैं, मतलब उसने जो भी इसमें लिखा है उसके बाद चार्ली खुद इसको टेस्ट करने के लिए जाता है कॉइन स्टोर में. उसको पता लगता है कि सैम ने $800 की पुरानी स्टाइल की करेंसी खरीदी है वहां जाने के लिए गेल्सबर्ग में, और अपना छोटा सा भूसे का बिजनेस उसने वहां और ग्रेन का शुरू किया है. वो हमेशा कहता था दैट्स व्हाट ही रियली विश्ड, कि मुझे हमेशा इच्छा होती थी वहां जाने की. मतलब जब भी चार्ले उसको बताता था कि कोई थर्ड लेवल है, ऐसा है, बहुत अच्छा है, शांत है सब कुछ, तो उसको इच्छा होती थी जाने की. वही उसने यहाँ लिखा कि मुझे हमेशा इच्छा होती थी और मैं वहां पहुंच गया हूं और मैं अपने पुराने बिजनेस में वापस नहीं जाऊंगा. गेल्सबर्ग में नहीं, इलिनॉइस, गेल्सबर्ग इलिनॉइस में नहीं, 1894 में. अब वो सोचने लगा चार्ले, हिज ओल्ड बिजनेस, पुराना बिजनेस, व्हाई? सैम तो मेरा साइकेट्रिस्ट है. ये बड़ी अजीब बात है. सो स्टूडेंट्स, नाउ you will get some questions to answer. Question number 1 is, what made Louisa, Charlie's wife, believe that the third level was a reality? Second, what do you infer from Sam's letter to Charlie? Third, the modern world is full of insecurity, fear, war, worry, and stress. What are the ways in which we attempt to overcome them? Fourth, what is a first day cover? So students, listen the video again. You can take screenshots also. You can pause the video and listen and watch it again if you have any doubt, and answer these questions as soon as possible. Students, thanks for watching this video. Please don't forget to subscribe and share this channel.
and press the bell icon if not pressed. Students, one by one and slowly I will prepare important videos on this YouTube channel to make you understand more and more about grammar. Further, I will also explain many types of grammar topics like passive voice, indirect speech, prepositions, modals, etc. You will find more and more. Thank you. Have a nice day.